Okay. So in the theory section, we have learned about the while loop, do while loop, and for loop. So those three varieties also, we will be solving a few programs, or I will be rather doing a few programs to make you more understand. So first in this video, I will cover about the while loop section using few examples. Okay, fine. So suppose I want to say that suppose there is a program that write a program to print uh, 20 stars. Okay, let's like this. Just like this in the output, I want 20 stars. Okay. So obviously, I won't be taking the star values in a variable and printing. So what I will be doing? So suppose the program is write a program to print 20 horizontal asterisks. Okay. So how can we do it? If I take a while loop and that while loop value I take from 1 to 20. If I run from 1 to 20, then for first time it will print 1, then next. So like this it will go on. So in the while loop, I will take a counter I which will run from 1 to 20. And since I have taken 1, I need to initialize. Since I have taken I need to initialize I. So I have initialized I. And I have given the value 1. So my I for the first instance will be 1, then 2, then 3. So while this is true, what I want to do, I want to print the asterisk sign. So just I will print the asterisk sign. Fine. And I will increment my counter each and every step so that it will start from 1, then it will move to the next, then it will move to the next like this. Now, if I execute, see, there are 20 asterisks side by side, right? So how did this thing run, right? I need to now understand. So see, what happened is your I was initialized to 1. Then in the while loop, you told till I is less than equal to 20. What we need to do for this condition? We need to print the star. After that, I need to do a increment, right? That means first your I value is 1, right? It after this statement it entered here. The so what happened is your this is your thing, your I value is 1 and this was your condition. If your condition is true, it was printing 1 star and you are doing the increment, right? So first after this exit first statement, your I is initialized to 1, right? Then the cursor from here will go to the next statement. Inside this is checked. Is I less than equal to 20? Yes. If it is true, enter into the loop. Enter into the loop. Do what? Print a star. Fine. Printed a star. Fine. This statement, I plus plus. So now I from 1 will become 1 plus 1, that is 2. Again, it will go back here. Again, it will check. Is 2 less than equal to 20? Yes. If it is true, enter. Do this statement. Do this statement. From I2, I will become 3. 3. Again, go back.
Is 3 less than equal to 20? Yes. If it is true, enter into the loop. Do this. Next statement in the loop. Increment I. Again go back. Is 4 less than equal to 20? Yes, if it is true. So like this, it will go on, go on, go on till while your value of I is less than equal to 20. This thing will go on and on and on. And in the meantime, it will print for every while condition becoming true, it was printing one star. Fine. And once after printing the 20th star, your I will increment, your I will become 21. Again, it will go back. Is 21 lesser than equal to 20? No. Once the condition is false, it won't enter anymore inside the while loop. And after the while loop, whatever statement is below the while loop, that is outside the while loop, below the first statement that is there, it will execute that. So here no other statements was there. The return 0 get ch statements was there. So that was executed. So this is the concept. Okay. So this is the concept. Fine. Now, in place of I plus plus, you can also write I equal to I. You can write this also. Okay. See, this will also work. See? Okay. You can either use the unary operator or you can do plus one also. Not an issue. Fine. Okay. So this is one program explaining the while loop. Now let us do another program. Suppose write a program to calculate the sum of first 10 numbers. Okay, this is the program. First, in theory, let us understand that what is the concept, the theoretical concept. Okay. So the program is to find out the sum of first 10 numbers. That means 1 plus 2 plus 3 plus 4, like this till just 10. Okay. So if I take a counter, suppose I am taking a variable sum, which I have initialized to 0. Fine. So for the first instance, sum plus I, if your I counter keeps track of all these things, sum plus I means 0 plus 1 is equal to 0, is equal to 1. Okay. Now this one, you are updating your sum variable, right? Because the previous sum you have, with that sum only, you will add the next digit. So always you need to update. So after this statement of execution, now your sum has the value 1. Next, you do I plus plus. So what is your I plus plus? I plus I is, you started at 1, now your I is 2, right? So again, sum plus I, that means your new sum is 1. 1 plus new I is 2, that means 3. This is updated in the sum variable only, see, 3. Again, I plus plus, I is 3. Sum plus I, new sum is 3 and new I is 3. 6. 6. I plus plus. 4. Sum is, updated sum is 6 plus new value number is 4. 10. I plus plus 5. Updated sum is 10 plus new is 5. 15. I plus plus 6. So like this, in the while loop, this will run till your value of I is less than equal to 10, because we needed sum of first 10 natural numbers.
and you will start I from I equal to 1 and you will start from sum equal to 0. Fine. Then see 0 plus 1, 1, 1 plus 2, the answer with that 3, the answer with that 4, the answer with that 5. That means you are doing the summation of the first 10 natural numbers. So there is will be one counter which will track the 10 numbers. In this counter, I will send inside the while loop because this program needs to run till for 10 natural numbers, right? And there will be another variable sum where I will save all my answers, updated results, right? And why this sum I initialize to 0? Because if I take a variable and I am not giving that variable any particular value, but I am, see, for the first instance, 0 plus 1, I am not giving sum any particular value, right? पहला स्टेप होने के बाद sum में कुछ value आ रहा है. So for this type of issues, this type of scenarios where we will take that variable and we will use that variable for showing the values of some other additions or so, we initialize it to 0 so that इस पे कुछ भी problem ना आए, कोई garbage value ना आए. ठीक है? We do that. Because if I add 0 with anything, my answer won't be affected. तो इसलिए हम लोग sum जब लेंगे, sum को initialize कर देंगे. Clear? तो अब प्रोग्रामिंग में करते हैं इसको कैसे करेंगे. Okay. So that is clear that inside the while loop, I will take a condition which will run for 10. And since I am taking this, I need to declare it. And also my number, first in numbers means my numbers will start from 1. So I am initializing it to 1. Clear? Then I will take another variable sum. और सिंस 1 plus 2 plus 3 plus 4 इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर्स में ही होगा, कोई डेसिमल का सीन है नहीं, तो इसको 0 में इनिशियलाइज करते हैं और इंच ही रखते हैं सम का भी डेटा टाइप. फाइन. नाउ inside the while loop, what is my statement block which will run for while being true? Sum is equal to sum plus I. और इसके साथ साथ हर एक I हो जाने के पहले, हो जाने के बाद, that means for I का वैल्यू 1, वो स्टेटमेंट रन होने के बाद I का वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होगा. इंक्रीमेंट होगा तभी मेरा नेक्स्ट डिजिट आएगा. पहले I 1 के लिए हुआ, फिर 1 plus 2 के लिए होगा, फिर 2 plus 3 के लिए होगा, फिर 4. तो ये हम एक एक बार डिजिट को इंक्रीमेंट करेंगे कैसे? मेरा काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो मेरा डिजिट हो जाएगा. ठीक ना? अब ये सारा समेशन हो गया. चलो 10 तक हुआ, 10 तक मेरा समेशन हो गया. अब ये कंडीशन, ये जो 3 आया, ये आया कैसे? देखो पहले I मेरा क्या था, इस स्टेप में मेरा I का वैल्यू 1 है. अब इस स्टेप में चेकिंग होगा. क्या चेकिंग होगा? Is 1 less than equal to 10? Yes. If it is true, it will enter. Enter हो गया, क्या होगा? Sum is equal to sum, मतलब तुम्हारा sum में अभी है 0 plus 1. So 0 plus 1 means 1. अभी I equal to I plus 1, माने I का वैल्यू हो जाएगा, I का पुराना वैल्यू था 1, अभी I का वैल्यू हो जाएगा 2. ठीक है? फिर से लूप यहाँ पे चला जाएगा. क्या चेक करेगा? Is 2 lesser than equal to 10? Yes. If it is true, पुराना वाला सम के साथ I का जोड़ो तो 1 plus 2 करके क्या आएगा? 3. अभी I इंक्रीमेंट करो, I 3 बन गया. फिर से यहाँ पे जाओ. Is 3 less than equal to 10? Yes. तो पुराना वाला सम के साथ I को जोड़ो तो I में अभी है 3, तो 3 plus 3 6 आ गया. अभी यहाँ पे है I इंक्रीमेंट 4. फिर से यहाँ पे is 4 lesser than equal to 10? Yes. If it is true, सम के साथ I को जोड़ो तो 6 plus 4 हो गया 10. यहाँ पे इंक्रीमेंट 5. Is 5 lesser than 10? Yes. If it is true, सम के साथ I को जोड़ो. ठीक है? हो गया मेरा 15. I इंक्रीमेंट 6. Is 6 lesser than 10? Yes. If it is true, सम के साथ I को जोड़ो तो मेरा बन जाएगा 21 और यहाँ पे मेरा बन जाएगा 7.
फिर से इज 7 लेस देन 10, यस इफ इट इज ट्रू, सम के साथ 7 को जोड़ो, यहाँ पे मेरा बन जाएगा 28, यहाँ पे मेरा बन जाएगा 8। फिर से इज 8 लेस देन इक्वल टू 10, यस सम के साथ 8 को जोड़ो, आई को जोड़ो, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 36 और यहाँ पे मेरा बन जाएगा 9। फाइन। इज 9 लेस देन इक्वल टू 10, यस अगर है तो आई को जोड़ो सम के साथ, यहाँ पे मेरा बन जाएगा 45 और यहाँ पे मेरा बन जाएगा 10। ठीक है। फिर से इज 10 लेस देन इक्वल टू 10, यस 10 तो 10 से इक्वल टू ऑपरेटर है ना एक, तो ये भी होगा, सम के साथ आई को जोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 55, यहाँ पे मेरा बन जाएगा इंक्रीमेंट होते 11। अगेन जाओ, is 11 less than equal to 10, no, once your condition is false, अभी और while loop के अंदर प्रोग्राम घुसेगा ही नहीं, प्रोग्राम डायरेक्टली जंप करके इस स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस स्टेप के आने के बाद मेरा क्या काम है, हमको समेशन मांगा था, तो मेरा काम है ये सम वेरिएबल को बस प्रिंट करवा देना। देखो सम वेरिएबल पे मेरा 55 सेव्ड हो गया है, अगर हम बस सम वेरिएबल को प्रिंट करवा देते हैं तो मेरा काम खत्म। ठीक है, तो हम ये सब डिलीट करते हैं, ये सब तो तुम लोगों को दिखाने के लिए किए थे। So my word after this for loop execution will be just the sum of the 10 numbers is परसेंटेज d सेव्ड हुआ है वेरिएबल सम में। क्लियर, बस यही है मेरा। तो चलो हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, द फर्स्ट 10 नंबर्स का सम आया 55 है ना, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते रहोगे 10 तक, तो 55 ही आता है समीशन। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट यूज करके थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके अगर हम देते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम m to n, मतलब ये जो हम 1 to 10 का समेशन अभी निकले हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम सम ऑफ नंबर्स का एक प्रोग्राम करो जो फ्रॉम m to n, माने कहां से कहां तक, ये हम नहीं फिक्स करेंगे कि 1 to 10 तक, ये फिक्स करेगा मेरा यूजर। यूजर विल इनपुट द वैल्यू ऑफ m, यूजर विल इनपुट द वैल्यू ऑफ n and accordingly they will give me the answer of doing the summation। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होगा। क्या इम्प्रोवाइज होगा, पहले तो इंट m एंड n को लेना है। अच्छा ठीक है, एक ही लाइन में ले लेते हैं, ये तो सारा इंट डिक्लेयर ही है। m और n को लेंगे तो यूजर से मांगेंगे ना कि एंटर द वैल्यू ऑफ m, मतलब स्टार्टिंग कहां से करें, तो स्कैनफ डालेंगे, फिर से यूजर से मांगेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये जो हम m और n यूजर से लिए, तो तुम्हारा, हम तो i लिए थे क्योंकि हम डिफाइन कर दे रहे थे i मेरा इक्वल टू 1 है। अब ये तो मेरा बन जाएगा m इनिशियल वैल्यू, ये 10 दिए थे क्योंकि ये डिफाइन कर दिए थे 10 तक, अब ये मेरा बन जाएगा n क्योंकि ये तो लास्ट वैल्यू कौन सा यूजर डालेगा। अब सम इक्वल टू सम प्लस m हो जाएगा, अब m इज इक्वल टू m + 1 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा m में ही तो इनिशियलाइज काउंटर है, वही इंक्रीमेंट होते रहेगा, है ना, इतने तक होगा। तो ये वाला आई हमें अभी चाहिए नहीं। फाइन, सी एंटर द वैल्यू ऑफ m, सपोज हम 1 डाल रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरा सेम आया कि नहीं। एंटर द वैल्यू ऑफ n, हम 10 डाल रहे हैं, सी द सम इज 55। यहाँ पे सम ऑफ द नंबर्स
फ्रॉम m to n is 65 सपोज डालते हैं 1 10 655 है ना। मतलब अभी ये हुआ एक यूनिवर्सल प्रोग्राम जहां पे यूजर स्टार्टिंग और एंडिंग वाला कुछ वैल्यूज डालेंगे और वो खुद ब खुद मतलब करेगा। ही विल कैलकुलेट दैट द कंप्यूटर विल कैलकुलेट। हम 1 और 10 स्ट्रिक्ट नहीं डाल रहे, पर देखो मेरा कॉन्सेप्ट एक ही है ना, व्हाइल लूप के अंदर ही चला है, राइट। ओके, suppose using the while loop I say that okay, suppose I say write a program to find the largest of 5 numbers using ternary operator। ठीक है, मतलब टर्नरी ऑपरेटर तो हमने सीखे हैं, माने अच्छा अब ये जो लार्जेस्ट ऑफ 5 नंबर्स है, ये क्या हम 5 अलग वेरिएबल लेंगे, उस 5 वेरिएबल को टर्नरी ऑपरेटर में डालेंगे, ये सब करेंगे ना। वी विल डू दैट। व्हाट वी विल डू इज we will take a counter or a condition that while your I is less than equal to 5, since 5 numbers का डाल रहे हैं, suppose starting from I is equal to 1, पहले I 1 के लिए वो क्या करेगा, पहले जब मेरा लूप 1 पे आएगा it will ask that enter the number, first number। ठीक है, वो नंबर तुम डालोगे स्कैनएफ में। अब ये जो नाम हम लिए हैं इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके नंबर डालोगे और उस पे वो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेगा। माने whether your name is easy greater than large or not, if your name is greater than large फिर your answer is num, else if your large is greater then answer is large, and this entire value you are saving it in largest variable suppose। ठीक है, सो हमको यहाँ पे लार्जेस्ट वेरिएबल का भी डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और लार्ज वेरिएबल का भी डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। अब देखो हम एक मैक्सिमम अपहोल्ड कर लेते हैं कि दैट माय लार्ज कैन बी मैक्सिमम ऑफ 3 to 7 6 8, दिस इज द अपर रेंज ऑफ एनी इंटीजर वैल्यू, राइट, एंड आई एम डूइंग I plus plus, fine, and I will print the largest of the numbers is बोल के सेव रहेगा मेरा लार्जेस्ट बोल के वेरिएबल में, है ना। ये काम कैसे करना है देखो, पहले तो इस स्टेप में आया, इस स्टेप में मेरा I का वैल्यू 1 है, तो मेरा इस स्टेप में आएगा is 1 lesser than equal to 5, yes, if it is true it will enter, लूप में एंटर करेगा, एंटर द नंबर ये शो कर रहा है। ठीक है, तो नाम बोल के वेरिएबल में हम सपोज एक नंबर डालें 29। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे आएंगे, इज 29 ग्रेटर देन दिस वैल्यू, यस, इफ इट इज यस देन लार्जेस्ट बोल के जो वेरिएबल है उस पे I hope the ternary condition you all remember, if A is greater than B, this condition is true, then the answer will have the value of A, else the answer will have the value of B. So if my condition true, then the answer will have the value of num, so 29। ठीक है,
अभी i प्लस प्लस माने i का अभी वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। फिर से यहाँ पे जाएगा लूप में, is 2 lesser than equal to 5? yes, if it is true it will enter the number, again एक नंबर डालोगे, अभी नंबर सपोज डाले तुम 15, ठीक है। अभी क्या चेक करेगा, sorry, this will be large only na, because the large needs to have the updated value so that it can compare, okay. Okay, now it will be compare what, is 15 lesser than 29? No. If it is not true, then in the large keep the value of large, that means the value of 29 is remaining. Clear? I plus plus means I3, then again 3 is lesser than equal to 5, yes, then again take a value, suppose I am giving 17, again it will compare, is your num greater than 29, because in large the updated value is 29. Is it true? No. If it is not true, then large में large का value रखो, तो large का value 29 है, that is already there, fine. 4 lesser than equal to 5, yes, if it is true take a number, suppose 19 I am taking, again it will check, is your num greater than the value of large? If it is not true, then in the value of this large variable updated value keep the value of b, that is b is 29, so 29 ही रखे, fine. Then again the counter will be incremented 5, again it will check, 5 is less than equal to 5, yes, if it is true take a value, okay, suppose 32, it will check, is your num greater than your large? Yes, if it is true keep the value of num in the large value, so the value of num is 32, see I have updated my large, again I will increment the counter 6, again it will go back, 6 is lesser than equal to 5, no, if it is not true it won't enter into the while loop, it will jump out of the while loop, and whatever statement is just below the while loop it will directly go to this statement, the cursor, okay. And in the meantime you have entered 5 numbers, because your counter was from 1 to 5, you were checking, your counter started from 1 and ended till 5, so for 1 to 5 you have taken the numbers one by one and you have used this concept and you have found out the largest one, and you see the largest one of the 5 numbers which you entered is saved in the large variable, right? So my motto will be, out of this loop I need to just print the large variable so that it will have the largest of the 5 numbers. Let me just delete these things, okay. So now you can see, without taking the 5 variables separately inside a while loop, just using a counter, you took the value of the numbers one by one and you found out using just a simple statement. So this is the utilization where we want to do repetitive statements. We use the concept of while, do while, for loops so that it eases our work. Now you will ask me that why have I taken this? Okay, I could have taken this also, fine, but actually the concept is, if you take the lowest possible range of largest, any number cannot be lower than this, because integer range is from -3 to 768 to +3 to 768. So I have taken the lowest margin of integer so that any number which you will enter will be automatically greater than this. Why? Because since I am using this variable, the value somewhere, so I need to initialize it with certain value now. So that is the reason I initialized with the lowest range, because below this range integers can never happen, right? So just let me execute it. Enter the number, suppose 29, again enter the number, suppose 15, 17,
19, 32. See, the largest of the number is 32. See how it becomes easy, right? So these are the few programs which I wanted to show using the concept of while loop, how the repetitive statements we do it. Okay. So in the next video, I will come with few programs explaining the concept of do while loop.